हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो खास उन क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इंग्लिश का एग्ज़ाम अक्टूबर 2024 में है बट अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है, या फिर एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस में है या कंफ्यूज हैं कि क्या क्या पढ़ना है। अगर आप भी इस उलझन में हैं कि कौन सा टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में आपके टोटल मार्क्स के इंग्लिश का जो पेपर होगा वो आपका टोटल मार्क्स 100 का होगा और आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो है 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है। आज जो चैप्टर्स हम लोग यहाँ देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे, वो है इंडियन वीवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स हम आपके लिए साथ में लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द पोएम इंडियन वीवर्स इज रिटन बाय। The answer is Sarojini Naidu. The next question is, bright garments represent. And the answer is marriage. The next important question is, the midnight represents. And the correct answer is death. The next question is, why the youth is compared with the fall of night. And the correct answer is, youth is perfect and matures period, as well as fall of night is mature period of day and night. Next important question is, write the color of marriage wheels. And the correct answer is, it is bright plums of peacock, purple and green. Next important question is, write the color of baby clothes. And the correct answer is, it is blue and hairy on bird, color and attractive. Next important chapter जो है, that is stealing and atonement. इस चैप्टर से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हाउ डिड गांधी जीज फादर रिएक्ट ऑन रीडिंग हिज कन्फेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज, ऑन रीडिंग द लेटर हिज टीयर्स trickled down and made the paper wet. He was full of agony. He closed his eyes in thought and tore up the confession note. The next important question is, what did Gandhiji used to do with one, his relative? And the answer is, Gandhiji and his relative became fond of smoking. They used to feel nice after keeping the smoke out from their mouth. They had no money, so they used to collect the left cigarette of their uncle. They also used to steal coin from the servant pocket money. The next important question is, why did they leave the idea of suicide? And the answer is, they left the idea of suicide because suddenly they felt the shy of death without any reason, so they left it. Next important question is, why did they collect stumps of cigarettes thrown by their uncle? And the correct answer is, they collected stumps of cigarettes thrown by their uncle because they had no money to buy cigarettes. Next chapter is My Only Cry. The first question from this chapter is, why does the child want the adults to talk of peace and fellowship? And the correct answer is, the child wants the adults to talk of peace and fellowship because they may understand how important these ideas are for the world. Next important question is, why has the poet chosen a child to voice his concerns? And the correct answer is, the poet has chosen a child to voice his concerns because the child is the most innocent stage of human life, in which he always speaks the truth and is the future of our world. Next important question is, what blames does the child put on the adults? And the answer is, the blames child put on the adults are telling lies and cheating the children. The child says that adults are also destroying the world by building arms. The adults are also hypocrites and stop the goodness of children from spreading. Next important question is, what things does the child cry for? And the correct answer is,
The child cries for the adults to stop making arm factories. He wants to stop making promises that adults break. Child cries to adults for being sick. He wants them to realize that they are hypocrites. Next important question is, within the quote, enough promises, enough waiting. This is the quoted line. Who have promised and who are waiting? And the correct answer is, the adults have given the promises of a peaceful world and time ahead, and the innocent children are waiting for the fulfillment of their promises. The next important question is, again within the quote, but through your fault, a wheel of dust lies over it. What is the fault committed by the adults? The correct answer is, the faults committed by adults are that they believe in power politics and have lost their faith in friendship and peace. They resort to war to establish peace in the world, but there is no peace through war. In fact, war has brought a load of dust over affection. The next important question is, why are words like friendship, peace, and fellowship not to be talked about by children? And the correct answer is, the words like friendship, peace, and fellowship not to be talked about by children because they believe that the adults have stopped talking about friendship, peace, and fellowship, while children practice these virtues. And also, the poet said that adults are the builders of a peaceful world, but they are unfriendly and are not at peace. Therefore, they should also start talking about these virtues like children. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को NIOS Academy 15 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। द नेक्स्ट चैप्टर इज द लास्ट स्टोन मैसन। The first important question from this chapter is, why did the old man believe that there are nothing that he could teach Salim? And the correct answer is, the old man believed that there was nothing that he could teach Salim because carving was already in his heart. That is why he carved the statue like an expert. The next important question is, why did the old man say, I will be the last stone mason? And the correct answer is, the old man said, I will be the last stone mason because all other sculptors went to Agra and had their other businesses. Even his own son left him alone and went for other business to earn more money. Next important question is, how the views of Gopal and the old man were different. And the correct answer is, the views of Gopal and his father were different, as on one hand, Gopal wanted to change his business and settle down in Agra because the sculptor work did not bring anything. On the other hand, though the old man knew that it did not bring anything, still did not want to leave his 100 years ago tradition because according to him, it was service to God. The old man very polite, and for him, work is worship. कुछ ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज भी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसको आपको फिल करना है। इस तरह से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ग्रामर रिलेटेड, जिसमें आपको फिल करना होगा। दो ऑप्शंस मिलेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश इन द USA। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, वर्क और वर्क्स का, जैसा इस तरह से दिखा रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, इसमें से कोई एक ऑप्शन को आपको टिक करना है, करेक्ट करना है कि आपके हिसाब से वर्क होगा कि वर्क्स होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश इन द USA, वर्क और वर्क्स। नेक्स्ट है, द न्यूज़ डैश पब्लिश्ड इन एवरी न्यूज़पेपर, वॉज या वर। नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज ऑब्लिक आर। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको कोई एक ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है और उस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। उस तरह से आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम में आते हैं। दैट इज़ ब्रैकेट में आपको फिलअप करना है कोई एक वर्ब, आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना है। रीता हैज़ बिन डैश इन दिल्ली सिंस बर्थ, ब्रैकेट में आपको दिया है लाइफ, लीव, तो वहाँ पे आपको लीव का करेक्ट फॉर्म इस ब्रैकेट के अंदर में भरना होगा। नेक्स्ट है, रमेश डैश अप वेरी लेट टुडे, वेक। वेक का आपको लेटेस्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें भरना है।
द पोस्टमैन हैज़ डैश 2 लेटर्स टुडे, डिलीवर। डिलीवर का आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होगा। नेक्स्ट आपका है वन ऑफ द बॉयज डैश फ्रॉम नेपाल, ब्रैकेट के अंदर है बी। कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए लेके आए हैं, कुछ और एग्जांपल आप देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, शुड, मस्ट, कैन, विल। इन चारों का यूज़ करते हुए आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। पहला ऑप्शन है, पहला आपका जो लाइन है दैट इज रीता डैश डांस वेरी वेल। अब इन चारों में से ही आपको कोई एक ऑप्शन चूज करके उस जगह पे भरना है। नेक्स्ट है यू डैश विजिट द फेयर इफ यू लाइक। नेक्स्ट है वी डैश ओबे द लॉज ऑफ द लैंड। नेक्स्ट लाइन है यू डैश नॉट लूज योर पासपोर्ट। अब इन चारों में से ही आपको ऑप्शंस में से इन चारों ऑप्शंस को यूज़ करते हुए इन 4 फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें ज़रूर और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।